we come to the second part of the immunity, that is acquired immunity. Acquired immunity is the specific line of defense. It is a pathogen specific line of defense. मीनिंग जिस तरीके से एक टाइफॉइड के बैक्टीरिया को मारा जाएगा और जो प्रोटीन्स के थ्रू मारा जाएगा वो अलग होगा। किससे? जिससे लेप्रेसी के बैक्टीरिया को अटैक किया जाए, जो अलग होगा एक फंगस के डिफेंस से। सो ये जो अप्रोच है, दिस इज कॉल्ड एज द नॉन स्पेसिफिक लाइन ऑफ डिफेंस। एंड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी has some properties like specificity, diversity. Now, what do you mean by? Let us first talk about diversity. These defense cells, they're able to recognize a diverse range of pathogens. And specificity means for a particular pathogen, they have a particular protein to destroy it. जैसे एक इंडिविजुअल एक पुलिस एकेडमी में गया, वहां जाने के बाद ही वॉज टॉट अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिमिनल्स दैट कैन एग्जिस्ट। जब वो एकेडमी के बाहर आया, अब वो सबको पहचानता है और हर एक क्रिमिनल के अगेंस्ट उसके पास एक अलग अप्रोच है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो ही नोज अ मर्डरर फ्रॉम अ थीफ who can do digital scams from a thief who does physical scams, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, और वो उसके हिसाब से उनको टैकल करता है। तो वैसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं वो डाइवर्स हैं, दे कैन रिकॉग्नाइज अ वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस एंड साथ साथ स्पेसिफिक भी है। फॉर अ पर्टिकुलर पैथोजन दे विल डिस्ट्रॉय इन अ पर्टिकुलर मैनर। इट हैज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सो द सेल्स नो कि कौन सा सेल उनको बिलोंग करता है और कौन सा सेल फॉरेन है। तो कुछ ऑर्गन्स है जहां पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के सेल्स की ट्रेनिंग होती है, जहां पे दे आर टॉट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन एंड देयर प्रोटीन्स। ये तुम्हारा प्रोटीन है, ये तुम्हारा प्रोटीन है, तुम्हारा प्रोटीन है, तुम्हारा प्रोटीन है। इसके अलावा जो भी प्रोटीन होगा उसको डिस्ट्रॉय कर। सो दैट इज व्हाट यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। The cells of the immune system have an immunological memory. They have an immunological memory. So what is this immunological memory? Can be demonstrated. Say, for example, there is a first contact of that acquired immunity with the pathogen. So that response, slowly the protein called an antibody that is produced against them will slowly increase. So the primary response is a little bit slow. It is of a low intensity. But then the acquired immunity remembers the attacker. And second time, the secondary response, the anamnestic response, is going to be faster with a greater intensity. तो उसने सेकेंड टाइम उसको ग्रेटर इंटेंसिटी से जो टैकल किया, उसके पीछे का जो रीजन था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिमेंबर्ड हु वाज द पैथोजन, एंड दैट इज कॉल्ड एज immunological memory, not the brain ka memory. This memory is called as immunological memory. So ये जो immunological memory है, who brings about this immunological memory, or what are the different types of the immunological memories? Rather, acquired immunity कैसे फंक्शन करता है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करें। So the acquired immunity operates through two types, okay, which is called as the AMI and the CMI. CMI, that is the cell mediated immunity, and AMI, that is antibody mediated immunity. ये दो टाइप्स होते हैं।
All these cells of our immune system, they come from the bone marrow. So in the bone marrow, we have pluripotent stem cells. They form the lymphatic precursor cells. Pluripotent stem cells क्या है? We already know that. They will form the lymphatic precursors. And those lymphatic precursors, with mature and develop in the bone marrow, they are called as the B cells or the B lymphocytes. And those which differentiate and mature in the thymus are called as the T cells or the T lymphocytes. Now, the B cells, when they encounter a pathogen, they differentiate into a plasma cell and a memory cell. The plasma cells produces specific proteins called antibodies against the pathogen, and these antibodies are released in the body fluids, which is called humor. That is why it is called the humoral immunity. These antibodies then destroy the pathogen, which can be called as an antigen. Any disease causing agent that will elicit an immune response is called as an antigen. एंटीजन वो कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट है जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को जागरूक करेगा, एलिसिट करेगा. Just like any person who works against our state is a criminal. So any disease causing agent that will activate the production of antibodies, वो अपने इम्यून सिस्टम को सतर्क करेगा, जिसको से इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाएगी, मतलब अपनी बॉडी ने उसको फॉरेन समझ लिया. फॉरेन समझो, फॉरेन नहीं, हम बोलेंगे उसको कि उसने उसको एंटीजन समझ लिया. अब ये एंटीजन सेल्फ भी हो सकता है या फॉरेन भी हो सकता है. कभी कभी हमारे खुद के बॉडी के सेल्स को हमारी इम्यून सिस्टम एंटीजन समझ बैठती है. कभी कभी हमारे खुद के बॉडी सेल्स एंटीजन बन जाते हैं, जैसे कैंसर के केस में. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ एंटीजन इज फॉरेन. And in order to destroy these antigens, the antibodies are of four types: GAMED, GAMED, IgG, IgA, IgM, IgE, and IgD. And this immunity is the humoral immunity or the antibody mediated immunity. This immunity is called the humoral immunity or the antibody mediated immunity. The next partner in crime with the humoral immunity is the cellular or the cell mediated immunity, where the T lymphocytes, which are matured in the thymus, when they encounter the pathogen, they proliferate, change into helper T cells, killer T cells, suppressor T cells, and memory T cells. So this immunity is called as the cellular or the cell mediated immunity. So let us take a case scenario and try to understand how this two types of immunities work. I am starting with the innate and the acquired immunity. Like the pathogen has entered in the body, first line of defense would be कि उसको अंदर आने ही मत दो. It has not entered, उसको आने ही मत दो. So your skin, mucous membrane will not allow. But समझो आ गया अंदर, then second line चालू हो जाएगा, जहाँ पे physiological barriers, cytokine barriers, cellular barriers, which includes the neutrophils, monocytes, they will not allow it to survive. समझो उससे भी बच गया हो. अब मेन शस्त्र निकालो, and that is going to be your specific immunity, the B and the T lymphocytes. Okay, they are the ones who will now take care of defending of our body. Now, some of these macrophages, they will engulf the pathogen, and पैथोजन जैसे कि एक बैक्टीरिया है, उसके कुछ पार्ट्स को अपने ऊपर डिस्प्ले कर देंगे.
and they'll take this displayed part to the helper T cells. As a result of which the helper T cells will get activated and they release cytokines, which will stimulate more helper T cells to get converted into killer T cells. And these killer T cells will rapidly undergo cell division to produce many clones of themselves, which will keep on releasing chemicals called lymphokines. And with the help of these lymphokines and the other white blood cells, the pathogens will be destroyed. So that is how the cell mediated immunity works. So in the cell mediated immunity, the helper T cells have a very important role to play. With cells, the helper T cells have a very important role to play. Now, the B lymphocytes, which are responsible for the activation of the antibody mediated immunity. तो जैसे वो मैक्रोफेजेस ने हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट किया था, या तो हेल्पर टी सेल्स या फिर कोई दूसरा मैक्रोफेज जिसको हम लोग कहेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, either the helper T or an antigen presenting cell will activate the B lymphocyte. And the B lymphocyte will then proliferate into a plasma cell, which will produce a specific antibody against that particular antigen. Now, this antibody will destroy the pathogen by three means, that is, opsonization, agglutination, and it can do it by neutralization of that particular pathogen. It is neutralization of the toxins produced by that particular bacteria. अब ये जो एंटीबॉडी है वो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल उसको अटैच हो जाएगा एट स्पेसिफिक साइट्स, ओके, एंड विल एग्लूटिनेट इट. Then the white blood cells will come and eat it out. That is called agglutination. Opsonization में these antibodies coat the bacteria, and as they coat that bacteria, it will come in the notice of the wandering white blood cells, and the white blood cells will come and eat it. तो समझिए, ऑप्सोनाइजेशन में एंटीबॉडीज ने उस पर्टिकुलर पैथोजन को हाईलाइट कर दिया ताकि आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स आके उसको एनगल्फ कर सके. कभी कभी एक बैक्टीरिया टॉक्सिन्स बनाता है जो बॉडी को हार्म करता है, तो एंटीबॉडीज इन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन. एंटीबॉडीज बनाते कौन है? प्लाज्मा सेल्स. उसके प्रोजेनेटर सेल्स कौन है? बी लिम्फोसाइट्स. तो कुछ जो बी लिम्फोसाइट्स है, they keep that antigen which had activated it, so that next time when the real pathogen comes, when the pathogen comes, these cells, which are now called as memory cells, will immediately bring about the secondary response. So these memory cells are specialized lymphocytes which will remember the antigen that had caused its formation. So next time with a second encounter, the response is going to be faster and quicker with a greater intensity. That is how the B lymphocytes work. These antibodies, as I mentioned, are of types called GAMED.
that is game. अब एक टिपिकल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हम देखेंगे. So remember, antibodies are proteins which belong to a large class of molecules which are immunoglobulins. These are immunoglobulins. So antibodies belong to this immunoglobulins. Antibodies belong to this class of molecules which are called as immunoglobulins. So all antibodies are immunoglobulins, but all immunoglobulins are not antibodies. A typical antibody is made up of four polypeptide chains, out of which two of them are heavy and two of them are light. So the antibodies are made up of heavy chains and light chains. So you have an antibody which is a Y-shaped molecule, and each heavy chain, each heavy chain has got two regions called heavy chain constant region and heavy chain variable region. Similarly, the antibody light chain also shows the presence of a constant region and a variable region. 5 टाइप की एंटीबॉडीज, पांचों का कांस्टेंट रीजन अलग होता है. हर एक एंटीबॉडी के टाइप में कांस्टेंट रीजन सेम होता है. जैसे अगर मैंने कहा GAMED, इनका कांस्टेंट रीजन आपस में अलग होगा, वेरिएबल रीजन तो डेफिनेटली अलग होगा. अब जी के अंदर अगर सब टाइप्स है, समझो XYZ, तो XYZ का कांस्टेंट रीजन क्या होगा? सेम होगा. वेरिएबल रीजन क्या होगा? अलग. तो 5 एंटीबॉडीज का क्लासिफिकेशन उनके कांस्टेंट रीजन के ऊपर बेस्ड. सो we'll continue our discussion further. A typical antibody is a Y-shaped molecule. It is H2L2, two heavy chains, two light chains. Each heavy chain has a constant region and a variable region. Each light chain has a constant region and a variable region. So एक heavy chain के पास ये मैंने हाईलाइट कर दिया ऐसी. This is heavy chain constant region. Heavy chain constant region. And this is the heavy chain light heavy chain variable region. Similarly, लाइट चेन के पास होगा लाइट चेन कांस्टेंट रीजन्स, लाइट चेन वेरिएबल रीजन्स. Now, and these H2L2, they are joined together by these disulfide bonds. We are interested in the variable part of the light chain and the heavy chain, this variable regions of both the chains. This variable region that I'm highlighting over here is the antigen binding site, is the antigen binding site or the paratope.
which binds to a specific antigen at its epitope. So the antigen has an epitope and the antibody has a paratope. And the paratope binds to the epitope to neutralize the antigen. So एंटीजन, अगर ये एंटीजन है तो उसके पास एक रीजन होगा, इस रीजन को हम कहेंगे एपिटोप। एंटीबॉडी के पास कॉम्प्लीमेंट्री रीजन होगा पैराटोप, जो उसके साथ एक लॉक एंड की जैसा फिट होके उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। सो इट इज द variable region of the light and the heavy chains, which are the antigen binding sites or the paratopes, which bind to the specific antigen at its epitope to neutralize it. So, अगर एंटीजन अपना एपिटोप चेंज कर लेता है तो एंटीबॉडी भी एक ऐसी नई बनती है जिसका पैराटोप उससे क्या करे, मैच करे। इसलिए हर एंटीजन के लिए अलग एंटीबॉडी होती है और सेकेंड टाइम जब वो एंटीजन एनकाउंटर होगा तो उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होगा दैट इज गोइंग टू बी मच फास्टर। दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू बी वर्किंग, dear students. Now, going back after understanding the antibodies and the T cell mediated responses, the acquired immunity, that is the specific line of defense, which has got memory, diversity, specificity, ability to distinguish self from non-self, is divided into two broad categories, active and passive. एक्टिव मतलब जब आपकी इम्यून सिस्टम खुद एक्टिवली इन्वॉल्व होगा in order and produces its own antigens, its own killer T cells to protect your own body. That is called active immunity. Passive immunity मतलब when you will get those antibodies, the soldiers from outside, your own immune system will not be involved. जैसे कि एक कंट्री है, उसको दूसरे कंट्री ने अटैक किया, अब वो कंट्री के पास खुद का आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है जो इन्वॉल्व होकर खुद को बचाता है, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव। पैसिव इम्यूनिटी, लाइक फॉर एग्जांपल एक कंट्री को दूसरे कंट्री ने अटैक किया, अब उस कंट्री के पास जिसके ऊपर अटैक हुआ है उसके पास खुद का डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, तो उससे सोल्जर्स एक थर्ड कंट्री से हायर की ले लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैसिव। तो जो खुद की इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है वो एक्टिव है, अगर इम्यून सिस्टम खुद की इन्वॉल्व नहीं है, सोल्जर्स बाहर से आ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे पैसिव। नाउ इफ अ पर्सन suffers from an infection, there will be a primary response, but now the secondary response is going to be much faster. So हो सकता है कि सेकेंड टाइम उस पर्सन को उस पैथोजन से डिजीज हो ही ना, तो हम उसको कहेंगे कि उसको उस एक्टिव है और ये क्या है, नेचुरल है। ओके, कुछ कुछ ऐसे डिजीज है जो इंसानों को नहीं होते लेकिन डॉग्स वगैरह को होते हैं, हमारे पास उसके अगेंस्ट एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी है। ओके, in the active immunity part there is called active artificial immunity, on which is based the vaccination programs. So we have an attenuated pathogen. Attenuated pathogen मतलब मेरी लैंग्वेज में एक लूला लंगड़ा पैथोजन जिसके अंदर डिजीज कॉजिंग एबिलिटी नहीं है, लेकिन वो हमारे इम्यून सिस्टम को सतर्क तो कर सकता है, नुकसान नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, मैंने एक वायरस लिया, समझो पोलियो का, या समझो XYZ वायरस लिया, उसमें से उसका जेनेटिक मटेरियल निकाल दिया, सिर्फ उसकी प्रोटीन कोट रखी जिससे बॉडी को हार्म होने वाला नहीं, एंड आई इंट्रोड्यूस इट इन द ह्यूमन बॉडी। Immediately the immune system got activated, produced antibodies against it,
Next time, when the real pathogen comes, it will be destroyed faster. The person will not suffer from that XYZ infection. That is active because your own immune system was involved. But the root of the infection was through vaccination programs. It's artificial. Passive immunity, जहां पे खुद की immune system involved नहीं है. Mother's first milk is called colostrum. It is rich in antibodies called IgA. So, as an infant, by drinking mother's milk, I get those antibodies which protect me from pathogens. So, that's a natural immunity. But nowadays, we know that we are able to produce antibodies in some animals like horses. So, these are called hyperimmunized animals. फिर उनमें से हम लोग ने उनके सीरम में से एंटीबॉडीज निकाले, अपने पेशेंट्स को इंजेक्ट किए ताकि हमारे पेशेंट के पास एंटीबॉडीज हो उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए. तो क्या ये पेशेंट के बॉडी ने खुद ने बनाया एंटीबॉडीज? नहीं. क्या उसको नेचुरली किसी प्रोसेस से मिले? नहीं. क्या उसको आर्टिफिशियली किसी प्रोसेस से मिले? यस, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. सो ये क्या हो गया? आर्टिफिशियल इम्यूनिटी.